Hello students. In this video we are going to have a quick overview of the topic that we were discussing earlier, and that was machines. All right. So in this chapter we talked about force and motion, right? So force is when you push or pull something, ठीक है? और उस push और pull से क्या हो it changes the direction of something, it changes the speed of something, या it changes the shape of something, right? तो हमने इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स ली थी, जैसे पुशिंग कार्ट इन इन अ स्टोर, ठीक है? इसके अलावा फॉर एग्जांपल पुलिंग डोर व्हेन यू एंटर अ होम, ठीक है? दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट रिलेटेड टू फोर्स, ठीक है? ये सारा काम जो है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ एन एनर्जी दैट इज प्रेजेंट कॉल्ड फोर्स, ठीक है? इसके अलावा वी ऑल्सो लर्न अबाउट मोशन, राइट? सो व्हाट इज मोशन? मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन कंपेयर टू समथिंग दैट इज नॉट मूविंग, यानी दो चीजें, एक वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको हम कंपेयर किसके साथ करें? नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी जो कि स्टिल है। इसमें हमने एग्जांपल ली थी, इफ अ पर्सन इज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड ही गेट्स अप एंड स्टार्ट्स टू वॉक अवे, तो वो पर्सन और चेयर जो है दे हैव अ यू नो अ कनेक्शन, और हम उसको क्या कहते हैं कि उसमें हम कंपेयर करते हैं कि विच वन ऑफ द थिंग इज मूविंग, the person was moving, so we called that person is in the state of motion, right? और जो object at rest है, that was chair, that was not moving, ठीक है? तो इन दोनों को हम compare करते हैं, moving और not moving object to explain the state of motion. Alright, so further we studied that force is actually of two types, that was gravity and friction. So the gravity is a type of force that pulls us toward the center of the earth, ठीक है? हमें center of earth pull करती है, ये ग्रेविटी ऐसी फोर्स है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ यू थ्रो एन एप्पल इन द एयर, यू विल सी कि वो एप्पल जो है इट विल कम एंड फॉल डाउन ऑन द ground. It's because of a force that is present on the earth, and that is called a gravity. Alright, इसी तरह हम next टाइप ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है? तो फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ फोर्स दैट इज क्रिएटेड जब टू ऑब्जेक्ट्स आपस में दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है? दो ऑब्जेक्ट्स, वन टू ऑब्जेक्ट्स या टू सर्फेसेस जो हैं दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ऑलराइट? तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये फोर्स फ्रिक्शन कहलाती है। फ्रिक्शन की हमने एग्जांपल ली थी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इफ यू आर टेकिंग अ स्लाइड, राइट, तो आप और स्लाइड दोनों की सर्फेसेस जो हैं व्हेन दे मीट टुगेदर दे क्रिएट अ फोर्स दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन, ठीक है? अगर आपकी सरफेस स्मूथ होगी, फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी लेस, लेकिन अगर आपकी सरफेस जो है दैट इज गोइंग टू बी रफ, ठीक है, तो द फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी ग्रेटर. Alright, so let's move on to the next part, and that says about machines. So machines क्या होती है? Machines are tools that helps us, जो हमें help करते हैं, help to make work easier, ठीक है? So that is what a machine is, ठीक है? So there are actually two types of machines. पहली type है simple machine, ठीक है? And the next type is compound machine. Alright, तो सिंपल मशीन में क्या होता है कि सिंपल मशीन्स में आपको या तो एक या फ्यू जो है वो
मूविंग पार्ट्स मिलते हैं जो आप यूज करते हैं टू अप्लाई फोर्स एंड दे स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। और कंपाउंड मशीन में क्या होता है कि 2 से 3 जो है वो सिंपल मशीन्स जो हैं वो अटैच्ड होती हैं इन ऑर्डर टू वर्क, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल मशीन्स के बारे में बात करूं, सो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल मशीन्स ओवर हियर, ठीक है। तो सिंपल मशीन में what are the different types of simple machine? The first one is a lever, okay. We studied कि जो lever है उसके लिए हमने example पढ़ी थी कौन सी, and that was of the seesaw, and it helps to raise or lower a heavy load, ठीक है। किसी लोड को या तो वो रेज करने के लिए या उसको नीचे उतारने के लिए यूज होता है, एंड वी यूज द एग्जांपल ऑफ सीसॉ फॉर दैट, ठीक है। हमने सीसॉ की एग्जांपल यूज की थी जो लेवर के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज the type of machine that is called inclined plane, ठीक है। तो inclined plane is a very different type of machine, और इसमें क्या होता है कि इसमें slanting surface होती है, ठीक है। so let's write over here inclined plane, alright। इसमें slanting surface होती है just like this one, एक ट्राइंगल की तरह, एंड इन दिस ट्राइंगल व्हाट हैपेंस इज कि आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से पुश करते हो और वो रोल डाउन होके जो है हायर प्लेस पर मूव कर जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑलराइट। सो लेट्स टॉक अबाउट machine that is screw, ठीक है। so let's talk about screw। और स्क्रू में क्या होता है, देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन एंड देयर इज अ सिलेंड्रिकल पोल, ठीक है। तो इसमें हमने एग्जांपल किस चीज़ की ली थी, अ ड्रिल मशीन, ठीक है। तो ड्रिल मशीन जो है दैट इज यूज टू फास्टन और होल्ड द थिंग्स टुगेदर। जैसे अगर कारपेंटर ने कोई नेल जो है उसको वुड के अंदर प्लेस करना है, तो ही विल यूज द स्क्रू और द ड्रिल मशीन इन ऑर्डर टू डू दैट इजीली। उसमें क्या होगा कि फोर्स उसकी अपनी जो है वो कम यूज होगी, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट another type of machine, and that is over here, and that is व्हील एंड एक्सल, ठीक है। तो व्हील एंड एक्सल में क्या होता है कि हम व्हील के साथ एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगा देते हैं या ऐसा बार लगा देते हैं या ऐसी कोई भी रॉड लगा देते हैं जिससे हम व्हील्स को यूज कर सकते हैं, और उस के ऊपर जो रॉड है दैट इज कॉल्ड एक्सल, ठीक है। तो उस एक्सल के ऊपर वी कैन लोड द हैवी स्टफ एंड वी कैन यू नो टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो इट्स अ कार, ठीक है, अ बाइसाइकिल, sorry, let's write the example again। so we write a car, ठीक है, और a bicycle, ठीक है। so these are the example of wheel and axle, all right। so moving on to the next thing, and that is pulleys, ठीक है। तो pulley is a very good simple machine। इसमें क्या होता है, वी हैव अ रोप, वी हैव अ व्हील एंड वी हैव अ लोड, ठीक है। और पुली में क्या नाम है, इट्स एक्चुअली ग्रूव्ड अराउंड व्हील, ठीक है, और इट इज यूज टू पुल अप द हैवी स्टफ, ठीक है। हैवी स्टफ यूज कर पुल अप करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रोप, दिस इज अ व्हील, और इसके बाद दिस इज द लोड और द बकेट जिसके अंदर सामान है। यू पुल दिस स्ट्रिंग और आप क्या करते हो कि ये वाला सामान जो हैवी सामान है उसको पिकअप कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ machine, simple machine, and it's gonna be over here, that is wedge, ठीक है। तो wedge क्या होता है, एक्चुअली wedge is actually two inclined planes that are attached to each other, and they can cut or make the things go apart, ठीक है। तो इसकी अगर एग्जांपल लें
A knife is a very good example of a wedge. ठीक है? So knife looks like this. It's actually an inclined plane जो दोनों एक join together. ठीक है? So that machine is called a wedge. आप एक side पे force apply करते हो and it cuts down the ink for you. Alright? So let's move on to the next thing, and that is gears. ठीक है? Gears जो हैं, let's take this over here. Okay. So gears में क्या होता है? Gears में you have a circular motion type, उसके अंदर lever होता है, और उसके बाद क्या होता है कि this lever actually जो है it moves around these circular gears. ठीक है? और ये इस तरह करके मूव करता है. अगर आपने बाईसाइकिल यूज़ की हुई है तो यू कैन सी कि उसके चेन में ये मैकेनिज्म होता है जिसको हम गियर्स कहते हैं. ठीक है? जैसे ही आप इसको मूव करेंगे, एक सर्कल को मूव करते हैं, द चेन that is wrapped around both of these circles will also start to move. Alright? So the last type of machine that we studied was compound machine. Or compound machine में we put down 2 or 3 simple machines. ठीक है? और उससे क्या बनती है? कंपाउंड मशीन बनती है. ठीक है? और अगर एग्जांपल लेनी है आपने कंपाउंड मशीन की, तो एग्जांपल इज इट्स व्हील बैरो. ठीक है? बिकॉज व्हील बैरो में ऑलरेडी इंक्लाइंड प्लेन होता है, उसके wheel and axle, and we have lever present. So that makes 3 simple machines. और इसको हम machine को क्या कहते हैं? Wheel barrow को. It's a compound machine. I hope you guys understand what was in this whole chapter and you prepare it accordingly. See you guys with the more content in upcoming videos.